Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे पोली पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. Students, according to Langevin theory of paramagnetism, magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature, but some metal found which exhibit paramagnetism independent of temperature. In 1927, the Pauli explained the paramagnetism due to free electron. In order to understand Pauli paramagnetism, we use the curve between density of state versus energy at absolute zero temperature. This curve can be split into two parts with spin pointing in z direction and other spin with opposite direction. In the absence of external magnetic field, the net magnetic moment of electron gases is zero. For example, distribution of electrons with spin parallel and anti-parallel are equal. But when we apply the external magnetic field along z-axis, the energy of spin aligned parallel to magnetic field is lowered by mu b Bohr magneton, and energy of spin aligned anti-parallel to b is raised by Bohr magneton. As a result, the energy level disturbed and we get unstable situation. ठीक है जी. तो देखें, ये है जी इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर बात की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारे पास गैप है ये, ठीक है, ये 2 म्यू बी है बोहर मैग्नेटॉन का. ठीक है, और आप देख भी रहे हैं कि आल्सो इन केस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इफेक्टिवली change in direction given as n effective is equal to 1/2 g effective mu b into b, where 1/2 is due to density of state of one distribution is half of total density of state. G is the spectroscopic splitting factors. ठीक है जी, हमने previous topic में डिटेल में डिस्कस किया. EF is the Fermi energy, mu b is the Bohr magneton. As each flip increase by 2 mu b, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं. सो द नेट मैग्नेटाइजेशन बिकम m इज इक्वल टू n इफेक्टिव. ये जो वैल्यू थी n इफेक्टिव की मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू बी. ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2 g e f म्यू बी इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू बी. सो m इज इक्वल टू g, ठीक है जी, e f इंटू म्यू बी स्क्वायर इंटू बी. Hence the Pauli spin susceptibility of electron gas becomes, ठीक है जी, chi p is equal to m over b. So chi p is equal to g e f mu b square. इसे ही हम कहते हैं जी Pauli paramagnetism. If we involve the permeability of free space, then chi p is equal to g mu b e effective mu b square. Mu naught का जैसे इजाफा हो जाएगा. Also g effective is equal to 3n over 2 EF. So equation 1 becomes chi p is equal to 3n mu naught mu b square over 2 EP. ठीक है जी. Also chi p is equal to 3n mu naught mu b square over 2 KTF. जो हमारे पास फर्मी एनर्जी होती है वो होती है KTE. So chi p is equal to 3/2 and mu naught mu b square KT over TEF. ठीक है जी, TFE. chi p is equal to 3/2 chi, ठीक है जी, T over TF. ठीक है, where chi is equal to n mu naught mu b square over KT for J is equal to 1/2. The magnetic susceptibility is considerable higher for most transition metal, unfilled inner transition और shells. ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था जी पोली पैरामैग्नेटिज्म से रिलेटेड. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. अल्लाह हाफिज़.